हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में दी हुई है कि एम एक पार्टिकल है जो इस हेमिस्फेयर पे रखी हुई है। ये हेमिस्फेयर फिक्स्ड है एंड हेमिस्फेयर का मास 4 टाइम्स ऑफ द पार्टिकल है। हेमिस्फेयर की रेडियस दी हुई है r। जब ये पार्टिकल स्लाइड करने लगता है हेमिस्फेयर पे और जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट छोड़ता है, सपोज इस पॉइंट पे वो कांटेक्ट छोड़ता है हेमिस्फेयर का, तो उस समय इस इंटायर सिस्टम मींस हेमिस्फेयर प्लस पार्टिकल का जो इंटायर सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास जहां पर भी हो, मान लिया कि वो यहाँ है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस क्या होगा। एक बार जब आपको ये डिस्टेंस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आप उसके इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हमने मान लिया है ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आकर पार्टिकल हेमी स्फीयर से कांटेक्ट छोड़ रहा है और वहां पे जो उसकी कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है। और उस समय पार्टिकल ने v स्पीड को अक्वायर कर लिया है। तो पहली चीज ये है कि जिस जगह पे कांटेक्ट छोड़ेगा पार्टिकल वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो 0 हो जाएगा। सो इट मींस ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा इन द नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन should be 0, at the same time n should be 0। तो आइए अब हम लोग उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इस ए पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है पार्टिकल पे, वो mv² बाई r है। दूसरी फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका जो ये कंपोनेंट है, अगर ये एंगल थीटा दी हुई है आपके, कुछ थीटा हमने एज्यूम किया हुआ है, तो ये एंगल आपकी क्या हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा होगा। And there is no other force acting in this direction apart from these two। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको mv² by r will be equal to mg sin theta। ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। Now from the energy conservation concept, particle while coming down on the hemisphere will lose its potential energy, and that will be equal to the gain in kinetic energy of that particle, because there is no dissipative force is working, all forces acting on it is conservative।
तो अगर आप ये बोलें A to B की हाइट h है, so mgh will be the drop in potential energy of the particle. And how much is the kinetic energy? It has acquired a velocity v, so we can write half mv square will be the kinetic energy. Now h की वैल्यू क्या होगी? अब h की वैल्यू देखिए, h की वैल्यू अगर मैं r से, जो रेडियस है हेमीस्फेयर का, उससे मैं OB को डिडक्ट कर दूंगा तो आपको h के बराबर मिल जाएगा। बट OB क्या है? OB is your r sin theta from the triangle OAB. You can see that OB will be r sin theta. तो h आपको क्या मिल रहा है? r into 1 minus sin theta. So if we put this value for h in equation this, so we will be getting mg r 1 minus sin theta is equal to half mv square. Bring r the other side, you will have mg 1 minus sin theta 1 by 2 mv square by r. From equation 1, we know that mv square by r is mg sin theta. So we will put this value over here, mg sin theta. So your mg will cut on both sides. So you are getting 3 by 2 sin theta is equal to 1. So sin theta will be equal to 2 by 3. So from here, we can get the value of cos theta as well. Cos theta will be 9 minus 4 square root, that is root 5 by 3. So this is the value of cos theta. So we have the value of cos theta and sin theta. So we can write x1 and y1 in the terms of that. So x1 will be equal to your OD. OD is what? From your triangle OAD, OD is r cos theta. So you're getting x1 is equal to cos theta. You can put the value. So root
5/3 into r. Similarly, y1 will be equal to your AD or OB. AD or OB. And what is that? That is r sine theta equal to r sine theta. So 2r/3. So we have got the coordinate x1 and y1 for the particle. Now, hemisphere is fixed and it is a hollow hemisphere. We know that the center of mass of the hemisphere lies on its symmetrical axis. But for this hemisphere, what is the symmetrical axis? For hemisphere, the symmetrical axis is y-axis. So its x component, x com, if we write, it will lie on the y-axis. So x com will be 0, which has been shown here, right? And y coordinate of the center of mass will be equal to r/2, as we know that center of mass of a hemisphere is r/2 distance above the center of the flat surface. So now you have the center of mass of your hemisphere as well as the particle. So you can get the center of mass of the system of hemisphere as well as particle by writing the equation. So let us say x2 y2 was the x2 and y2, the center of mass of the system. System, when we say system, means particle plus hemisphere. So what will be x2? We can write from the equation x2 will be equal to mass of the hemisphere, that is 4m, into x component of its x coordinate of its center of mass, that is 0. The mass of the particle into x coordinate of the particle, that is root 5/3r. We will write here divided by total mass of the system, that is 4m plus m. So what you are getting is r, m will cancel out. This is 5, so root 5, so this will be root 3 root 5. This is x component of the center of mass of the hemisphere and the particle system. Now we will write for y component, that is y coordinate 4m into y coordinate of the center of mass of your hemisphere, that is r/2, plus mass into mass of the particle into center of mass of the
particle in the y direction means y coordinate, that is 2r by 3. Cancel out 2 divided by the total mass. So here you will get 2r, 6r, into 4, 6r plus 2r, 8r divided by 5, 3, 15. 8 by 15 r. 3 to 3 to the 6 to r. 6 plus 2, 8r divided by 5, 3, 8 by 15. So this x2, y2 you have got. In the question, it is asking the distance of the center of mass of the system from the origin, like O. Origin coordinate, you know that it is 0, 0. So distance between, if we say this was the origin and this was the x2, y2. So distance between those two will be x2 minus 0 square plus y2 minus 0 square root. So you can put the value over here for x2. So you will be getting x2 is r square by 9, 545. y2 864. This is 64. 15, 15, 225 r square. Solve it further. R will come out. This will be 225. 5 plus 64. So finally you are getting 69 by 15 R. And in the question, you can see that the distance is given by this expression. Square root of 69 divided by 5 alpha. So this is equal to square root of 69 in question by 5 alpha is 69, cancel out, R cancel out, 5 alpha is 15. So 5 alpha is 15, therefore alpha will be 3. So this will be your answer. So this will be your answer. अंडरस्टैंडिंग में अगर कहीं डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.